21 days. Mera father Mukti fighter, and he was a government officer, ऊपर लेवल का. फिर भी उनके देहांत के बाद ये बांग्लादेश की सरकार में सचिव के बेटे हैं और जिनको आज बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे हैं. मैं मेरा जान के लिए, मेरा परिवार के सिक्योरिटी के लिए मेरे को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. अभी भी हमारा 14 एकड़ जमीन, नॉट द आई मीन द पेडी लैंड, इट इज फॉर द घर और गार्डन. 14 एकड़ आप मान के चलिए, 42 बीघा जमीन हम लोग छोड़ के आया है और वो कब्जा करके रखा है ये मुस्लिम लोग. आज भी है. मैं लास्ट ईयर भी गए थे बांग्लादेश घूमने के लिए, वो जाके देख के आया हूँ. वो लोग आराम से उसको खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं. हमको बोलते हैं आप तो भाग गए, आइए आपका जमीन ले लीजिए. आप बोलिए मैं उसका जमीन मैं ले सकता हूँ? मैं जाऊंगा उसको कि मेरे को जमीन दो, वो मेरे को दूसरा दिन उसको घर के अंदर ही मेरे को मार के वो दवा देगा. और भाई साहब आप लोग भारत मतलब डिफरेंट टाइप के. बोलिए. जब हारता है धर्म की शरण में आता है और आज आप धर्माचार्य की शरण में हैं. क्या कुछ मांगे हैं और किन बातों को लेकर आज धर्माचार्य की शरण में हैं आप? तो धर्माचार्य का शरण कोई आया है टू गेट आवर मेंटल पीस दैट इज डिस्टर्ब, एंड बिकॉज वी आर हिंदू, धर्माचार्य Shankaracharya is a Hindu, so we came here to get his blessings so that we can have a peace of mind in future, so the other Hindus have a peace milenga in their mind. In Bangladeshi Hindu, Shankaracharya कुछ मांगों के साथ भी आए हैं शंकराचार्य के सामने आप लोग. वो मांगे कौन कौन सी हैं बांग्लादेश only thing Bangladesh के मांगे के लिए we only thing मांगा है, they give us a peace, you do something so that they live in peace. We need they need a land or they need a place where the Hindus can live in peace मिलेगा day in day out. बहुत सारी टेक्निकलिटीज है. देखा जाए कितने को वीजा खत्म हो गया, कितने का रोजगार छिन गया, कितने की नागरिकता भी जा सकती है अगर सीए लागू होता है. तो इस सब चीजों को लेकर क्या आश्वासन मिला या क्या मांग रही है आप लोग? क्या यहाँ पर? हाँ यहाँ पर we want the Hindus यहाँ पर आएगा. If India government allows, then they can get some shelter, live a life as a human being. That we manga hai through to Shankaracharya ji and also India government. आज आप लोग काशी में हैं, धर्म की शरण में हैं. क्या कुछ किन मांगों के साथ आज आप शंकराचार्य की शरण में आए हैं? We are Bangladesh is in a crisis, so we writing. I went to United Nation. I think you can speak little bit Hindi. मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आता है. Little bit. मैं English और Bengali. Okay, you can speak. You may so continue. yeah, so I went to United Nation and I seek help because Bangladesh people, Hindu people, my community people, they cannot talk. The media is not covering. Media is not saying anything. They don't have anybody or anywhere they can go. If their daughter get raped or their husband get killed, they don't have anybody to go because there is no law and order. So আমরা উনাদের জন্য কথা বলি, যারা আমরা বাংলাদেশের বাইরে থাকি আমরা উনাদের পক্ষ হয়ে কথা বলি, লেখালেখি করি, বাংলাদেশের পৃথিবীর মানুষকে জানাই যে এটা কি হচ্ছে বাংলাদেশে. যখন আমরা গুরুজির কাছে, কাশীতে গুরুজির কাছে আমরা লিখেছি আমরা আসতে চাই, আমাদের কথাগুলো আপনারা শুনবেন. বাংলাদেশে this is people are getting tortured every single day. Hindus are getting tortured. What is the changes after the Sheikh Hasina government lost his majority? What is the current changes in Mujibur Rahman government? Sorry, sir, again? वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुए हैं शेख हसीना की सरकार में और अब की सरकार में? Sheikh Hasina सरकार में there were attacks on Hindus. There were attacks on Hindus, but situation now is because Hizbut Tahrir. This is a terrorist organization, Jamaat Islami, who are against 1971. Now they are in power. So you can see the difference. Sheikh Hasina was Sheikh Hasina's father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, given us Bangladesh.
So we have culture. We are able to celebrate National Day. We are able to sing Amar Shunar Bangla national anthem loudly. Now they're saying they want to change the national anthem. They want to change constitution. They want to change the name of Bangladesh as well. अच्छा, is there any informants to change his religion, convert Hindu to Muslim? Yeah, there were lots of forces, and some people willingly changing their religion because they're scared. They want to live in dignity because no mother wants their daughter to be touched. No mother wants their daughter to be raped. So they think, okay, if my daughter married to a Muslim guy and she's safe, let her be safe. So there are a lot of conversion. Yes. My sympathy with you, but I Thank want you. to know at a human angle, what is the condition about your family, your property right now in Bangladesh, and you are visiting Varanasi to save, and apart from your family, where is and what is doing right now? I don't have any contact from my family for a long time now. Since Bangladesh, Sheikh Hasina left the country, I don't have any contact with my family in Bangladesh because I want them to be safe. And they're not doing much. They just, I don't know how they're doing, but they're just suffering inside. They're suffering, emotionally suffering. They are tortured. They're mentally tortured. So nobody living in peace in Bangladesh. That's the thing. No good Muslim, no good people living in peace in Bangladesh. Nobody. They are torturing the freedom fighters. They are torturing the teachers. The teachers. The after parents. Who are the guru? The teacher. They are torturing him. It means we can say Bangladesh is not a Bangladesh, it is a terrorist country. Bangladesh is not Bangladesh at the moment. We want Bangladesh to be back. That's why we came to India. We want Modi government to intervene and make it a Bangladesh again, because this is our country. We fought for this country and we want our country to be back.